माइक्रोन्यूट्रिएंट एप्लीकेशन इन प्लांट्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों है, कैसे है, इस पे हम बात करते हैं। व्हेन यू सी अ लीव्स आर येलो बट अदर पार्ट इज ग्रीन। In another condition, leaves are yellow, its veins are dark green. One is a difference of magnesium deficiency, another could be difference of manganese deficiency. तो iron, boron, calcium, zinc are few other examples of micronutrients. These are, as the name suggests, those nutrients which are required in very small quantities, yet they have vital role in movements and translocation of elements, in providing immunity or tolerance of a plant towards environmental condition. तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो मार्केट में सेपरेट भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगनीज है, वो सल्फर के साथ आपको मिल जाएगा इन फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, या मैंगनीज सल्फेट मिल जाएगा, जिंक सल्फेट मिल जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट को आमतौर पर ये आप देखेंगे कि एप्सम साल्ट जो है एक और एग्जांपल है जो सब नाम से जानते हैं। तो इस टाइप के आप इनको अलग से भी खरीद सकते हैं। सल्फर जो है वो एज ए सिंगल एलिमेंट भी मिल जाता है बोरोन की तरह ही।